रिप्लेस कर देते हैं. This is what we say. Now after replacing the things and in the hub, what we can do cannot go for the random connectivity. It means come up with my device and the device is empty. So I connected over here, I connected over here, I connected over here, I connected. Not possible. Nothing as such. यहाँ पे हम random connectivity को perform नहीं कर सकते. Here we cannot perform the random connectivity. Every time if we have to connect, so we need to connect with the series combination only. First 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is the thing. And due to this such kind of the criteria, due to such kind of the characteristics, it called as dumb device. इन्हीं क्राइटेरिया की वजह से, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको डम्ब डिवाइस के कैटेगरी में कहा जाता है. These are things. Understood over here? डाउनलोड करना के बाद में Yes, sir. Very well. So let's move ahead. Next device is your switch. Let's have a look at how it got represented graphically. Explanation पे जाने से पहले इसको देखते हैं कि graphic. Okay. So this is how we represent it graphically. इस तरीके से हम इसको graphic.
over here, just one more. We say is delivering the message, delivering the content, same as the hub. ये हब के तरीके से काम करता है जो आपके मैसेज को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इट आल्सो सेज कि आई विल गिव यू द कनेक्टिविटी टू द मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ सिम. ये आपको कनेक्टिविटी देगा मल्टीपल डिवाइसेस को सेम नेटवर्क है. सिंपल. फर्क इतना है, द डिफरेंस इज इट कैन गिव यू द कनेक्टिविटी ओवर द टू सेगमेंट दैट इज वायर्ड और वायरलेस. ये दो सेगमेंट पे कनेक्टिविटी दे सकता है आपको वायर्ड और वायरलेस के ऊपर. ओके. एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इट ऑलवेज गिव यू द कनेक्शन with the device over the parallel combination. Means every ports is available over here. Every ports are connected with each other in the parallel segment. They all are independent. They are not dependent on each other. Sorry. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे पोर्ट्स आपके क्या है, वो सारे पोर्ट्स आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ना कि सीरीज में. तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है, ना कि डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है वो अपने पर्सनल वर्क के लिए, इंडिपेंडेंट है वो अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए. दिस इज व्हाट. तो यहाँ पे सो ओवर हियर इफ आई से कि द यूजर इट कैन बी बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये अगर डेटा एक यूजर एक यहाँ से यहाँ पे अगर डेटा ट्रैवल करा रहा है, सेंड कर रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में ही होगा. एंड हाउ वी आर अचीविंग दिस पॉइंट, और इन दोनों कर रहे हैं. इट इज अ फीचर ऑफ स्विच दैट इट मेंटेन्स. ये फीचर है आपके स्विच का जो ये करता है कि डिलीवर्स द पैकेट टू द डेडिकेटेड यूजर एंड डेस्टिनेशन. दिस इज द फीचर एंड इट इज अचीविंग विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग टेबल. ये इस चीज को अचीव कर रहा है स्विचिंग टेबल की हेल्प से. कैसे? In the switching table, we are having port number or MAC address which exactly knows कि which device is connected at which port. यहाँ पे switching table के अंदर एक mention है port number और MAC address जिसको पता होता है कौन सा device किस port के ऊपर connected है. So over here if I say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, port number 1, which 2, 3, where 4, where 5, where 6, where 7. This is the thing. So now port number 1 is sending the message to the port number 5. So the port number 1, this MAC address initiated the data transfer. Port number 1 ये MAC address ने data transfer को initiate किया. तो आखिर वो data भेज कहाँ रहा है? He is trying to send the data to which one? So might be it is sending the data to the this one, this MAC address. वो इस MAC address को data को share कर रहा है. And where this MAC address is located? This MAC address is located over the port number 5. So deliver the data to the port number 5, dedicated to that user, dedicated to that destination, same as with again. Same चीज वापस उसी तरीके से चलेगा. And this is what the main work of switch. ये क्या है? एक main work है switch का, where every ports are independent. यहाँ पे सारे ports independent है जिनको पता होता है कौन से डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है. They knows कि which device is connected at which point. Another point says कि we can go for the random connectivity as well. यहाँ पे
हम क्या कर सकते हैं, रैंडम कनेक्टिविटी कर सकते हैं. पोर्ट नंबर 16, 13, 15 occupied. 13, 14, 15. 6, 13 and 15 are occupied. We connected. But what we saw over the port number 15, I am unable to use the internet. I am unable to use it. Port number 15 पे हम कुछ काम नहीं कर पा रहे. Okay, no problem. So simply I will eject myself from the port number 15 and I will connect with port number 14. Very easy. Port number 15 was fault. So when any kind of the fault occur, it never lets your connection down. नेटवर्क फेलियर. जब भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम अगर इस स्विच के अंदर आता है, तो ये कभी भी आपको नेटवर्क फेलियर के स्टेट के अंदर नहीं लेकर के जाए. नॉट पॉसिबल. हाउ? विद द हेल्प ऑफ इट्स एलईडी लाइट्स. Yes, sir. So these LED lights. So I just organize in the rough estate, but they all are organized as sequence the ports are. ये सारे कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे आपके पोर्ट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर्स. अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर्स दे ऑल आर गेट आउट. पोर्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारे एलईडी लाइट्स. नाउ देयर इज अ थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स. यहाँ पे थ्री कॉम्बिनेशन है लाइट्स का. फर्स्ट वन, स्टिल ग्रीन कलर. अगर स्टिल ग्रीन कलर में है वो लाइट, इट मींस सम डिवाइस इज कनेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्ट. उस पोर्ट के ऊपर कोई ना कोई डिवाइस कनेक्टेड है. इफ दैट ग्रीन कलर इज इन ब्लिंकिंग स्टेट, अगर वो ग्रीन कलर ब्लिंकिंग स्टेट में है, तो मतलब उस पोर्ट के ऊपर कोई ना कोई ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज हो रहा है. तो सम काइंड ऑफ द ट्रांसमिशन इज अकरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्ट. इफ देयर इज नो ग्रीन, देयर इज ओनली रेड, वहां पे सिर्फ रेड है, इट मींस दैट पर्टिकुलर पोर्ट इज corrupted or it is having some kind of the issues. अगर वो रेड सिग्नल शो कर रहा है, मतलब वो पोर्ट खराब हो चुका है या उस पोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी फ्रॉम द डिवाइसेस, दैट कैन बी फ्रॉम द हार्डवेयर सेगमेंट और दैट कैन बी फ्रॉम द पोर्ट एज वेल. वो जो प्रॉब्लम है वो किसी भी पैरामीटर्स पे हो सकता है, मतलब वो डिवाइसेस के टर्म पे हो सकता है, वो आपके हार्डवेयर सेगमेंट पे हो सकता है, वो आपके पोर्ट्स के पिंस की वजह से हो सकता है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है. दैट नीड टू सिट एंड रेक्टिफाई. वो बैठ के रेक्टिफाई करना. नेक्स्ट थिंग, ना ही ग्रीन है ना ही रेड है, नीदर ग्रीन नॉर रेड, इट मींस दैट पर्टिकुलर पोर्ट इज एम्प्टी. वो पर्टिकुलर पोर्ट क्या है, एम्प्टी है. दैट इज व्हाट द एलईडी सिग्नल्स. ये क्या है, एलईडी सिग्नल्स बताता है. नाउ विद ऑल दोस स्टेटमेंट्स इट सेज कि वी नीड टू मेंटेन द हेल्थ स्टेटस. हमें क्या है, एक हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना पड़ता है. सो वी ऑल नीड टू मेंटेन आवर हेल्थ, राइट. वी ऑल यूज टू मेंटेन द हेल्थ एज वेल. हम लोग भी अपना हेल्थ मेंटेन करते हैं. सो ओवर हियर द स्विच मेंटेन इट्स ओन हेल्थ स्टेटस ऑन इट्स ओन. यहाँ पे स्विच अपना खुद का हेल्थ स्टेटस मेंटेन करता है. हाउ? बाय फिल्टरिंग द बैड पैकेट. बैड पैकेट्स मींस मिसिंग वैल्यूज, अनवांटेड डेटा, करप्टेड डेटा, डेटा जैमिंग, मिसलीडिंग पैकेट्स, फॉरगेटन पैकेट्स. तो ये सारी जो टर्म्स हुए इनको बोलते हैं बैड पैकेट, जो आपके कनेक्टिविटी में कंजेशन क्रिएट कर सकते हैं, व्हिच कैन क्रिएट द कंजेशन ओवर योर नेटवर्क. सो इट फिल्टर आउट दैट काइंड ऑफ द पैकेट. वो आपके इन सारे पैकेट्स को फिल्टर आउट करता है एंड लेट्स द गुड पैकेट टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट. गुड पैकेट, गुड वैल्यू, they need known as where we need to get delivered, exact what the details they needed, everything what is required to reach towards the destination. वो सारी चीजें जो भी रिक्वायर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीजें इसके पास है. दैट इज व्हाट द गुड पैकेट इज. दिस इज हाउ द स्विच आल्सो मेंटेन इट्स ओन हेल्थ स्टेटस. इस तरीके से स्विच जो है अपना हेल्थ स्टेटस खुद मेंटेन करता है. एंड ड्यू टू ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वी से स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस. हम क्या कहते हैं, स्विच जो है हमारा वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है. ओके, सो देयर इज अ वन मोर पॉइंट which is advanced, but you need to know only for the knowledge purpose that might be encountered in the interview. हो सकता है कि ये चीजें इंटरव्यू में इनकाउंटर हो जाए, बट कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको आगे पता चलेगा. हाउ इट परफॉर्म्स, हाउ वी आर डूइंग, इट विल बी अंडरस्टूड इन द
further classes in the higher classes, but over here you need to know that this thing also happens. ये चीजें भी होती है. So over here the thing says, who is responsible for dividing the one network into the three segments or multiple segments? कौन सा डिवाइस है जो एलिजिबल है एक नेटवर्क को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर, मल्टीपल नेटवर्क्स हम बात नहीं कर रहे, मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करने. So that is a switch. The switch says over here we can create the boundary. Suppose this black one says I am the research part. Suppose this red one says I am a development section. ये red one कह रहा है कि development section है. Suppose this brown one says I am the normal auditors, normal employees of the organization. ये जो brown वाले हैं वो क्या है, वो normal employees हैं आपका organization, normal. Now what we have done over here, we have divided the one network into the three segments. यहाँ पे एक network को मैंने तीन segment में divide कर दिया. Now it is possible that the person who is belonging from this normal team, normal employee, he can establish the connectivity with your developer or with your research team. क्या यहाँ पे ये जो normal employee है क्या वो आपके research team से connect कर सकता है, वो development team से connect कर सकता है? Not possible. Why? The things got defined. यहाँ पे चीजों को सेपरेट कर दिया गया, यहाँ पे चीजों को डिफाइन कर दिया गया. So whatever they can do inside their own segment. ये जो भी चीज कर सकते हैं वो अपनी रेशियो में कर सकते हैं, अपने कनेक्टिविटी के अंदर कर सकते हैं. Even they all are connected within the same device, they cannot communicate with each other. यहाँ पे सारे लोग एक ही डिवाइस के अंदर कनेक्टेड हैं, बट फिर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते. Why? The segments. It is called as VLAN switching. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Virtual LAN switching. This is the. So hello भैया is understood by everyone. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes sir. Any queries चलो भैया guys? यहाँ तक ये आपने सेगमेंट बनाया था ना सर? हाँ ठीक है सर, समझ गया सर. यहाँ पे देख लेते हैं मैक एड्रेस क्या है. This is always unique where? Unique in your surrounding, unique in your terms, no. Unique all over the world. Unique पूरे world के ऊपर. ठीक है? So whatever the MAC address that you are occupying by your device, it cannot be same as the another. जो भी MAC address आपका device occupy करके रखा है, वो कभी भी दूसरे के MAC address से match नहीं करेगा. वो all over the world में आप किसी को भी random pick कर लो, that is not going to match. You can pick any device randomly, it is not going to match. Even though if you are having the same company of laptop, same series, the MAC address is not going to change. Same. तब भी अगर आपका सेम लैपटॉप है, सेम सीरीज का लैपटॉप है, सेम कंपनी का लैपटॉप है, तब भी आपका मैक एड्रेस मैच नहीं कर पाएगा. So now, let's move towards the next segment. The next segment says, next point is your router. जो नेक्स्ट डिवाइस है वो कौन सा है हमारा? राउटर.
let's have a look how it get defined graphically presented. This is how we represent this router graphically. Okay, this is the router. So when we say router, so the things come in our mind. This is wireless connectivity. That is what it is used for. हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे ही एक नाम लेते हैं राउटर, राउटर का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक नाम आता है, मतलब वायरलेस कनेक्टिविटी. मतलब क्या, मतलब कहने का सेंस कि जो राउटर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके वायरलेस कनेक्टिविटी. तो राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस द वायरलेस कनेक्टिविटी. बट द स्टेटमेंट सेज, बट व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ राउटर इज, जो एक्चुअल यूज है राउटर का वो क्या है कि आपको वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके रखना. The main responsibility of the router is to maintain your connectivity with the internet. In the whole networking segment, the router is the only device which can get itself connected over the internet, which is going to handle all the things of the internet in the wired segment. एक पूरे नेटवर्किंग सेगमेंट में, पूरे नेटवर्किंग डिवाइस में एक राउटर ही ऐसा डिवाइस है जो अपने आप को खुद इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, वो भी वाइड सेगमेंट के ऊपर. और जो भी चीजें इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं वो इसी के टर्म पे चल रही हैं और इसी के थ्रू चल रही हैं. इन द एब्सेंस ऑफ राउटर यू कैन नॉट एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी विद योर इंटरनेट. अगर एब्सेंस है राउटर तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस द वायरलेस कनेक्टिविटी, बट itself it is connected with the internet in the wired segment. ये रिस्पॉन्सिबल है हमें वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन इन जनरल ये कैसे कनेक्ट है वायर्ड सेगमेंट में इंटरनेट के ऊपर. इफ यू डोंट बिलीव मी, इफ यू आर हैविंग राउटर एट योर होम, यू कैन गो एंड हैव अ चेक. अगर आपके घर पे राउटर है तो आप चेक कर सकते हैं. इन द बैक साइड ऑफ द राउटर यू आर हैविंग द टू केबल्स, वन इज पावर एंड वन इज ऑप्टिकल फाइबर. एक दो केबल होंगे, एक पावर अप करने के लिए और एक ऑप्टिकल फाइबर केबल. If you insert the optical fiber cable, sorry, if you eject the optical fiber cable, जब आप उस चीज को eject कर देंगे, you cannot connect with the internet. आप connect नहीं कर पाएंगे अपने phone से. That is the point. That is the thing. यही चीज होती है. ठीक है. So router is also responsible for fulfilling the request of the user.
राउटर रिस्पॉन्सिबल है आपके यूजर के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए. It actually knows where the resources are located, how to fulfill who's requested for which thing with the help of routing table. इसको पता होता है कि इसने क्या रेस किया, कैसे फुलफिल करना है, कब फुलफिल करना है, ये सारी चीजें इसके पास मेंटेन होती है with the help of routing table. So routing table in front of you is a very basic routing table which contains the port number and IP addresses. यहाँ पे जो राउटिंग टेबल है वहाँ पे आपके दो टर्म्स है, पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस. ये काफी बेसिक राउटिंग टेबल है. एज वी गो फॉर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द राउटर्स वी आर हैविंग मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द टेबल. हम लोग जैसे जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द राउटर जाते हैं हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द टेबल आते जाते व्हिच कंटेन्स द इंडेक्स वैल्यू, व्हिच कंटेन्स द राउटिंग टाइम, व्हिच कंटेन्स द यूआरएल्स एंड ऑल. जो आपके इंडेक्स वैल्यूज, राउटिंग टाइम, यूआरएल, ये सारी चीजों को भी स्टोर किया जाता है. दिस इज द थिंग. Okay. So it never mess up in providing you the details that whatever you requested for. ये कभी मिस अप नहीं होता, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि जो भी चीज आपने रिक्वेस्ट किया है उस चीज को फुलफिल करना. इट ऑल्सो यूज टू स्टोर द कैश एंड कुकीज. ये और चीजें स्टोर करता है क्या? कैशे और कुकीज. नाउ व्हाट इज कैशे एंड व्हाट इज कुकीज? कैशे इज द अमाउंट ऑफ हिस्ट्री, इज द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. ये एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ हिस्ट्री होता है जिसको लोग कैशे बोलते हैं. एंड इन द कुकीज सेज कि over that particular history what the task you have performed is cookies is used for capturing your session. cookies आपके session को capture करने के लिए यूज किया जाता है. मतलब आपने Amazon पे विजिट किया, मींस you visited on the Amazon. So what you have seen, what you have done over the Amazon, what you have performed. You visited YouTube, so on the YouTube what you have searched for, what you have seen. YouTube पे आप विजिट किए, YouTube पे आपने क्या किया. That is the reason कि if you used to watch a movie over the YouTube, so next time when you will open, you will get the lots of the recommendation of the movie similar to that what you have watched. तभी आप जब YouTube ओपन करते हैं तो YouTube पे आपने मूवी देखा, कोई भी मूवी देखा, और जब अगली बार उसको ओपन करते हैं तो अगली बार ओपन करने के बाद आपको उसी से मैचिंग, उसी से सिमिलर मूवीज के रिकमेंडेशंस with the help of cookies. तो cookies generally stores the session. cookies क्या करता है? आपके सेशंस को स्टोर करता है. And it stores the cache and cookies for two things. ये आपके दो चीज के लिए आपके कैश और कुकीज को स्टोर करता है. फर्स्ट वन फॉर फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट, पहला आपके रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी फुलफिल करने के लिए. दूसरा नोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर. दूसरा यूजर के इंटरेस्ट को जानने के लिए कि एक्चुअली इन व्हाट थिंग द यूजर इज इंटरेस्टेड फॉर, किस चीज में यूजर इंटरेस्टेड है. दिस इज थिंग. And due to all this category, it is also considered as an intelligent device. इस टर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको भी इंटेलिजेंट डिवाइस के कैटेगरी में फॉल करता है. दिस इज व्हाट योर राउटर. ये आपका राउटर है. अंडरस्टूड गाइस? Yes. एनी क्वेरीज? थोड़ा ऊपर कीजिए तो. हो गया सर? हाँ जी. ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों सेम है? नहीं, अलग अलग. सर यू स्विचिंग टेबल में यू राइट द मैक एड्रेस एंड दिस यू राइट द आईपी एड्रेस. हाँ, तो राउटर किसके ऊपर काम कर रहा है? ओके, इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो आईपी एड्रेस. और स्विच जब भी काम करेगा तो उसके अंदर काम करेगा. वो जब भी काम करेगा तो मैक एड्रेस पे काम करेगा, क्योंकि वो इंटरनली लोकेट कर रहा है, ना कि वो ग्लोबली लोकेट कर रहा है. स्विच तो बेसिकली बट वो तो एप्पल वाले डिवाइस के लिए मैक एड्रेस यूज होता है. क्या मतलब? सर एप्पल वाले डिवाइसेस के लिए मैक एड्रेस यूज होता है एज कंपेयर टू विंडोज. वो उसके लिए पूछ रहा था. किस चीज के लिए? सर ये जो आपने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस लिखे सर, आपका एप्पल का डिवाइस हो. हाँ सर मैक एड्रेस यूज होता है कि विंडोज में भी मैक एड्रेस यूज होता है. बात को सुनिए आप पहले. देखिए, पहले समझना ये है कि हम कर क्या रहे हैं. राउटर मेरे इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करता है, और इंटरनेट के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना हो, वो विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, कोई भी, वहां पे आईपी एड्रेसेस का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, इंटरनेट के ऊपर. और जब हम इंटरनल पर्पस पे काम कर रहे हैं, जब हम एक
टर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैक एड्रेस आपके विंडोज में भी होता है, लिनक्स में भी होता है, और आपके iOS और एप्पल के भी होता है। मैक एड्रेस एक ऐसा टर्म है जो आपके डिवाइस को लोकेट करने के लिए एक परमानेंट एड्रेस है, जस्ट लाइक दैट कि आपके फोन का IMEI नंबर होता है, उसी तरीके से आपके डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। ओके सर, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चीजों के लिए एप्पल हमेशा मैक यूज करता, नहीं, एप्पल मैक कभी यूज नहीं करता, एप्पल हमेशा IP यूज करता। ठीक है, अंडरस्टूड है भैया? यहाँ पे किसी को और कोई क्वेरी है? नो सर। वेरी नाइस। द नेक्स्ट वन इज ब्रिज। जो नेक्स्ट वन है वो ब्रिज है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, हियर द टर्म्स अपीयर। सर ब्रिज मींस आवर ओवर ब्रिजेस। जो हमारे ओवर ब्रिज होते हैं, वो जो हमारे फ्लाईओवर्स होते हैं, वो क्या आप उनके बारे में बात करें? बात तो उनके बारे में नहीं कर रहे, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट वट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर प्रोवाइडिंग, that what it includes over here, the bridge. Can anyone specify कि what are the characteristics of flyovers and the overbridges in our town? हमारे जो टाउन्स में होते हैं, जो फ्लाईओवर्स होते हैं, जो ओवरब्रिजेस होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई बता सकते हैं? To control the traffic. Sorry? To control the traffic. Control the traffic. Okay, very nice. The computer, we control the data packages limits. हम अभी उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। I'm not talking about on that. I'm just talking about the characteristics. कि उस फ्लाईओवर्स कैसा लगेगा उसके जंप करने के लिए, उसको पार करने के लिए? क्या रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है कुछ, जैसे दो शहर के बीच में नदी मिल गई तो उसको पार करने के लिए? वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और सर पाथ में कोई बैरियर ना आ जाए उसके लिए। वेरी वेल। टू कनेक्ट टू अनअटेस्टेड प्लेस। ओके, वेरी वेल। To minimize the distance. To minimize the distance, very nice. और बस only this much. Minimize the distance, connectivity, the unassociated place, like maintaining the connectivity between the two different zones, two endpoints, providing us the fast traffic, reducing the traffic loads, recovering from the unwanted recovering from the unwanted traffic jams, avoiding lots of the heavy traffic, right? Providing us the fastest route. This can be the things. इतने सारे characteristics तो बता दिए, correct? So whatever the characteristics you have defined over here of the bridges that you are having in your actual life, that what the characteristics of the bridge actually performed as a networking device over here. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अभी अपने ब्रिज के बारे में बताए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इस ब्रिज के ऊपर भी डिफाइन किया जाता है। हाउ, व्हाई? तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्यों ऐसा, व्हाई सो, इन चीजों को समझते हैं। एट द टॉप फ्लोर के ऊपर मेरा एक नेटवर्क चल रहा है, एंड आई गॉट एन ऑफिस एट अ ग्राउंड फ्लोर। मेरे पास एक और ऑफिस मिला आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। सो want the same network to work at the ground floor. हम चाहते हैं कि ये सेम नेटवर्क जो है मेरा ग्राउंड फ्लोर पे काम करे। और लेट्स अज्यूम इन डिफरेंट वे, हम लोग इसको एक और डिफरेंट वे में से, मेरा ऑफिस है जो टॉप फ्लोर पे चल रहा है, सेम ऑफिस मेरा ग्राउंड फ्लोर पे भी चल रहा है। आई एम रनिंग द डिफरेंट नेटवर्क ओवर हियर, और यहाँ पे भी एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा है। आई वांट टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी विद इन बोथ। हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। So what the shortest path? Sir, don't worry about anything. Simple draw the cable from here to here. यहाँ पे क्या करें, एक केबल को
यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर, दैट कनेक्टिविटी इज एक्चुअली इट इज करेक्ट. ऐसा भी हो सकता है, वी कैन परफॉर्म दिस थिंग एज वेल. हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि is my cable is able to handle the load of that particular request, particular network. क्या यहाँ पे मेरा ये जो डायरेक्ट केबल है वो उतने लोड को हैंडल कर पाएगा? नहीं कर. Is that particular cable is going to differentiate between at the same time? क्या ये केबल डिफरेंशिएट कर पाएगा कि कौन सा, अगर दो क्वेरी एक बार रेज हुआ उन दोनों के बीच में क्या ये डिफरेंशिएट कर पाएगा? What if they both started sending and receiving the data at the same point? क्या होगा अगर दोनों नेटवर्क ने एक साथ एक ही डेटा को फेच कर लिया या दूसरे डेटा को एक दूसरे के साथ सेंड करने लगे? क्या हमेशा नेटवर्क लॉस, डेटा लॉस. In the same way, we assume the things over the single lane. ये चीजें हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं अपने ट्रैफिक के ऊपर, अपने नेटवर्क रोड के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेन. और इन द सिटी के अंदर हम लोग इन सारी चीजों को बहुत देखते हैं. सो अज्यूम दैट योर रोड इज योर नेटवर्क and that particular vehicles that are over the dome are packets. Assume करें कि वो जो नेटवर्क, जो रोड है जिसके ऊपर आप चलते हैं वो एक नेटवर्क है और जो भी चीजें उसके ऊपर चल रही है वो सारे पैकेट्स हैं. तो चीजें समझ में, the things will be understood. So what if you are having a single way? क्या होगा अगर आपके पास सिंगल वे है और दोनों तरफ से एक साथ ट्रैफिक आ, कोलिजन, और माइट बी देयर कैन बी द ट्रैफिक जैम. कोलिजन होगा, ट्रैफिक जैम होगा. सेकंड पॉइंट, suppose you are having a railway track in between the road, always traffic jam. अगर रोड के बीच से अगर एक रेलवे ट्रैक जा रहा है तो वहां पे हमेशा ट्रैफिक जैम होगा. To avoid all those things, what we come up, इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? We create a bridge, flyover. हम लोग क्या करते हैं? फ्लाईओवर क्रिएट करते हैं. हम लोग एक ब्रिज क्रिएट करते हैं. जस्ट go above that, you will reach towards the destination. Now, advantage, less traffic handling, less traffic jam, faster route, reaching towards the destination before the time, easy solution. क्या हुआ? हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं है. ऑप्टिमम लेवल ऑफ नेटवर्किंग, इसको बोले हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ नेटवर्किंग. क्या किया मैंने? सिर्फ एक फ्लाईओवर को डिफाइन किया. इन द सेम वे over here what we are going to do, we are simply going to add one platform that called as bridge, which is known as a connectivity platform. It is a multiple input and multiple output, means you can provide as much as input over here, it can create the multiple output as much as you can. So simple, will connect over here and इन दोनों को कनेक्ट कर दें. इसको नहीं करेंगे, we not do this kind, here we'll do. So now what is going to happen? It is going to manage all the spread sets of the network. It's no collision will occur. कोई भी collision यहाँ पे occur नहीं होगा. This is what the bridge used to. Now, the one thing cannot be done over here is that your fastest connectivity, your network speed. यहाँ पे एक चीज नहीं हो सकता, वो क्या है? राउट को मेंटेन करने के लिए, आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी को हैंडल करने के लिए, आपकी चीजों को एक्सपैंड करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए, उसको फास्टर राउट प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे एक चीज ये अचीव नहीं कर सकता है, एक चीज वो दे नहीं सकता, वो क्या है? आपका नेटवर्किंग स्पीड. So for that thing, what we are having one device called as repeater. एक डिवाइस है मेरे पास जिसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटर. Now what is the repeater? So
this is the device which is responsible for hosting the data packets and मेरे को नहीं पता network. नेटवर्क Nothing. ये चीजों को बूस्ट करने के लिए काम करता है. Only for boosting purpose. Repeater is only used for boosting purpose. Repeater आपके टर्म को बूस्ट करने के लिए, आपके सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए काम आता है. That is what it says. So in the somewhere what we say, we use the bridge and repeater together. कहीं कहीं पे हम bridge और repeater को साथ में use करते हैं, कहीं कहीं पे हम separately use करते हैं. Where we use the separately. In the same way over here, if I say कि over here my over on the top floor it says कि I'm running on the 10 Mbps. So you're not going to get the 10 Mbps. You will always get the 8, 8.1 or 9 Mbps maximum. अगर यहाँ आप ये कह रहे हैं कि आपको 10 Mbps का हम स्पीड दे रहे हैं, तो कभी भी 8 Mbps नहीं, सॉरी 10 Mbps नहीं होगा, वो हमेशा 8 होगा या तो 9 होगा maximum. कभी भी 10 रीच आउट नहीं करेगा फॉर श्योर. सो हु इज गोइंग टू मेंटेन दैट टर्म? उस चीजों को मेंटेन कौन करेगा, उस चीजों को इनहेंस करके रखेगा कौन? दैट इज व्हाट योर रिपीटर इज. उस चीजों को रिपीटर परफॉर्म करता है. फॉर द लॉन्ग रेंज ऑफ कनेक्टिविटी, फॉर द लॉन्ग रेंज ऑफ कनेक्टिविटी, जब लंबी दूरी की कनेक्टिविटी पे हम जा रहे हैं तो हर एक केबल का लेंथ होता है 400 मीटर्स. हर एक केबल का जो लेंथ होता है वो 400 मीटर्स का होता है, कि मतलब वो एक बार में 800 मीटर तक लेके जा सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. वो क्या कर सकता है कि 400 मीटर तक डेटा को कैरी करके लेके जा सकता है, लेकिन 400 मीटर के बाद क्या, व्हाट हैपन आफ्टर द 400 मीटर्स? We need one device called as repeater, which is going to again enhance, again circulate the thing for another 400 meters. तो हम वहां पे रिपीटर को इंस्टॉल करेंगे जो उसको आगे के 400 मीटर के लिए बूस्ट अप करेगा, जहां पे मेरा डेटा लॉस क्रिएट ना हो और हम मैक्सिमम दूरी तक जा सके. That is what the repeater says. In the same way, if you are having a colony of the 50 houses and each colony is required the 2 kilowatt of energy, so who is going to maintain this electricity of the 2 kilowatts? So we are not going to give the 50 houses the separate connections. हम 50 घर को separate connection तो देंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उसके लिए एक डिवाइस को मेंटेन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर. That we use the device called as a transformer, which is responsible for maintaining the current flow over that network. उस केबल के ऊपर, उस वायर के ऊपर उसका जो कनेक्टिविटी के टर्म पे है, वहां पे जो पूरे डेटा के जो लोड है, जो भी सारी चीजें हैं, जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है, जैसे उसको मेंटेन करने के लिए हम एक टर्म की जरूरत पड़ती है जिसको ट्रांसफार्मर, जो सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है. And when the cable ends, so we use one black box in the kind of the loop to create the connectivity. That is called bridge. जहाँ पे हमारा एक केबल खत्म होता है, तो वहाँ पे एक लूप के टर्म पे हम ब्रिज को यूज करते हैं, यहाँ पे establish करते हैं. This is what your bridge and repeater is. Understood, guys? समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. सभी को समझ में आया? Yes, sir. These are things. So over here I am having a few images. मेरे पास कुछ images हैं. Let me show you. This is your bridge is performing the connectivity. यहाँ पे आपका bridge connectivity perform कर रहा है. And here I am having the correct numbers of devices. This is your devices that we have. Okay. So we haven't discussed the modem. यहाँ पे हमने modem discuss नहीं किया. Why? कि all of the features of the modem got discussed over the router. जो भी modems के features हैं वो router के अंदर ही discuss हो गए. That is it. Okay. Understood, guys? Very well. Now let's move towards the next device called as NIC. अब दूसरे device के ऊपर move करते हैं जिसको बोलते हैं NIC.
क्या अपने stands अपने for रूम को कोई गंदा होगा इतने दिन से तो ये बोल रहा हूँ। कौन से रूम को बोल रहा? हाँ हमारा वाला अपने रूम को क्यों क्यों नहीं करते? अब अच्छा आ रहा है तो दिन दिन अच्छा आएंगे ना आप। अब बुरे दिन छोड़ दो। हाँ हाँ साफ करो निर्मा से ढूंढना सेंटर मार लेना थोड़ा साफ सुथरा रखना चाहिए और लिपा पोती कर देना झाड़ झूड़ मार देना ऑर्डर छिड़क देना इत्र वित्र लगा देना। आएंगे शाम 2-3 बजे तक this आएंगे is वो in the form of 4 very बजे easy to तक understand what is NIC. काफी easy है अपने NIC को समझना. पहुंच गए होंगे। So anyone can tell me सीतापुर what is खाई क्यों नहीं operating दिया था system तो perform? Operating system क्या perform करता है? What is operating खा गए system? बरस कोई बता सुबह सकते हो operating system क्या है? सुबह खाए क्या? हाँ चारों खा गए अब पूरे खाना था छोटे छोटे तो थे। ठीक अरे है बताइए भाई operating system क्या है? Hello everyone. Why so silent? A device Yes, which helps to Yes, sir. connect the which help to connect us operating system. क्या operating system? So device which help us to connect over the internet or Operating system is a device. no like Operating Okay. system is the platform, sir, type over the hardware device Platform for what? for access the device. For accessing the device. Okay. And next one. manage hardware and software, sir. Manage hardware and software. Okay. Next one. Operating system is a system which control all the activities happen in computer. Operating system helps handle all the connectivity happening over the System, computer system. very. So this is what you spoke about operating ये system. क्लास लगा But very bad response. Prepare for उधर it. लगाओ बहुत ही गंदा response है. चीजों को prepare करो. Very basic question guys. You all need to know about all this. इन चीजों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए. Why? Because the operating systems, the things I can't say कि it should be known by everyone, but you should know about. Like you are from the tech guy, you are from the non-tech guy. Doesn't matter. आप techy हैं, आप non-techy हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन operating system क्या है, ये पता होना चाहिए. Very pretty guys. So now, operating system is a kind of software which help us to interact with our hardware segment, which is acting as an interface. ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमको हेल्प करता है कि आप अपने हार्डवेयर सेगमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे. मतलब हम जो है आपको इंटरफेस दे रहे हैं जहां पे आप चीजों को accomplish कर सकते हो. Where you can accomplish the things like giving the commands. Like commands in कि I want to open this PC, so please open this PC. आप जिस PC को open कीजिए. You want to make the partitions, you can create the partitions. This is what it is. So what it is giving you? Interface. ये क्या दे रहा है? Interface. Now what is the interface? अब यहाँ पे interface क्या है? तो interface where the human interacts. Interface क्या है? जहाँ पे human being interact करता है. If I give you the scenario where everything is written in front of the 0 and 1, no one is able to understand. अगर मैं आपको एक इंटरफेस से जहाँ पे चीजें 0-1 के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, कोई नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो लिखा हुआ क्या है वो सारी चीजें. बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स, द लैंग्वेज 0 and 1. जो हमारा कंप्यूटर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो हमारा हार्डवेयर सेगमेंट है, वो क्या अंडरस्टैंड करता है? सिर्फ एक लैंग्वेज को, 0 और 1. So what the operating system is giving us? The interface where the human can interact. In the same way, just like operating system is giving us the interface, operating system हमें interface दे रहा है, but who is telling the hardware segment
This is your Wi-Fi connectivity. This is your Bluetooth connectivity. This is your USB connectivity. This is your Ethernet connectivity. Who is telling them? हार्डवेयर सेगमेंट को कौन बता रहा है कि ये आपका वाईफाई कनेक्टिविटी है, ये आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, यहाँ पे आपके यूएसबी पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट के ये वर्जन्स हैं, वाईफाई का इतना रेंज है, यहाँ पे ईथरनेट का पोर्ट है, यहाँ पे आपके सीडी इजेक्ट होंगे, इंसर्ट होंगे. कौन बता रहा है? कौन कनेक्ट कर रहा है ये सारी चीजों को? एनआईसी. Who is providing this kind of the feature to the hardware segment? NIC. What NIC? NIC stands for Network Interface Card, which is handling all the connectivity types over the hardware devices. So आपके पूरे hardware devices के ऊपर connectivity type को maintain कर रहा है कि here you can insert the USB 3.0, 2.0. Here you can connect the Ethernet port. यहाँ पे आप Ethernet port को connect कर सकते हैं. This is your Wi-Fi signal. This is your Wi-Fi terms. Now the thing is, अब यहाँ पे क्या है कि आखिर Wi-Fi को कैसे पता है कि you can go up to the 1 kilometers, you can go to the 400 meters. Wi-Fi को कैसे पता कि आप 400 meters का रेंज होगा आपका 200 meters का रेंज होगा. Bluetooth को कैसे पता कि 20 meters का रेंज है? How the Bluetooth is saying कि this is the range of 20 meters? How? That is with the help of NIC. So Wi-Fi, Bluetooth are the technology which is running over the NIC. जो आपके एक NIC के ऊपर run कर रहा है. The Wi-Fi stands for wireless fidelity, which says कि I'm responsible for sharing the networks. हम क्या है? हम अपने नेटवर्क को शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. From where you can access the internet, जहाँ पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. This is the. Now you connected the Ethernet port. आप Ethernet port को कनेक्ट कर रहे हैं, तो who is telling that particular device कि hey look, this is the Ethernet port connected, you have to work with this device. यहाँ पे Ethernet port कनेक्ट हुआ, यहाँ पे आपको इस तरीके से काम करना है. Who is telling them? NIC. You all want to use the Wi-Fi or wireless mouse. You are going to market, you are purchasing the mouse and you are coming and it gives you the one USB chip that need to be get inserted inside your device. वो एक आपको USB chip दे रहा है जो आपके डिवाइस के अंदर इंसर्ट होना. NIC मतलब कार्ड रहता है वो जिसको कहते हैं. And it also says Bluetooth. वो क्या कहता है? Bluetooth है. Enable for sure, right? You can have a check. If you are having the wireless mouse, you can go with the description. You will find. Okay sir. And you are searching for the Bluetooth device. I said over your phone. अगर आप सर्च करेंगे क्या ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फोन के ऊपर, तो कभी भी उस माउस का ब्लूटूथ डिवाइस आपके फोन के ऊपर शो नहीं करेगा. Why? Because it is designed for that portion. And who designed? Who is handling all those things? NIC. You are unable. सिग्नल यूज नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे? So you will simply go to market, you will purchase the Wi-Fi adapter, you will insert it and you will work. What is that Wi-Fi adapter? NIC. This is the handling all the connectivity type. ये रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे हार्डवेयर सेगमेंट के ऊपर कनेक्टिविटी टाइप को हैंडल. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes sir. Yeah sir. Any queries? Yes sir. Yes sir. किसी को कुछ पूछना है? Yes, Pooja? Very well. So the last statement of the NIC says that this is in the form of chip. So here you can have a look. The NIC is always represented in the front of chip. NIC आपके format of the chip. This is what. तो NIC is everywhere. NIC आपके हर जगह पे है. तभी आप किसी भी चीज से वायर्ड कनेक्टेड है. जहां भी हम चिपसेट का बात करेंगे,
where we are talking about the chipset, where we are talking about the electricity board that called as motherboard, there will be the NIC. जहाँ भी हम चिपसेट के बारे में बात करेंगे, जहाँ भी हम मदरबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे NIC का प्रेजेंट होना मैंडेटरी. Okay guys. Next one is your cable. Cable, Ethernet cable. So this is your homework, guys. Okay, so you have to find it out. So when you are joining the class tomorrow, so make sure you all are having the answer of this question. जब आप कल क्लास ज्वाइन करें तो आप सबके पास ये आंसर होना चाहिए कि केबल को हम इथरनेट केबल के टर्म पे क्यों जानते हैं. Now the cable says a very the cable is a kind of medium which is letting our connectivity to done means it is a kind of the term which is helping us to establish the connectivity with the multiple devices. ये एक टर्म है जो हमको हेल्प कर रहा है कि हम जहाँ पे अपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एंड वेयर वी कैन शेयर दैट, जहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, सारी चीज. तो इट इज अ काइंड ऑफ द मीडियम, एक तरीके का मीडियम. दैट इज इट. नाउ as in the electricity term we are having the multiple things, we are having the multiple tools. इलेक्ट्रिसिटी केबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम एक इलेक्ट्रिसिटी केबल को बिल्ड करते हैं फॉर द कनेक्टिविटी. इन द सेम वे वी आर हैविंग इन द नेटवर्किंग एज वेल. ठीक उसी तरीके से हमें दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज क्रिपिंग टूल. ये क्या कहलाता है? क्रिपिंग टूल. And sometimes we call it as a punch. Crimping tool. Sharp blade the cable in the two separate things or to cut the jacket. ठीक है, jacket means the upper layer. ये केबल को कट करने के लिए और साथ ही साथ केबल के अपर जैकेट को कट करने के लिए यूज किया जाता है. The yellow bar that is showing in front of you, that is used for removing the upper jacket, straightening the cable and maintaining the position. ये क्या यूज करते हैं? अपर जैकेट को रिमूव करने के लिए, केबल को स्ट्रेट करने के लिए और केबल के पोजीशन को मेंटेन करने. Okay, this is what it says. And the white space over here you are seeing it is used for punching. Punching what? The connectors. Which connectors? The Ethernet connector. Ethernet connectors over the two segments called as RJ11 and RJ45 connectors. So over here we are having RJ11. So the connector in front of you is known as RJ11. So this is your RJ11. RJ11 registered jack 11. Registered jack 11, which is widely used inside the telephone signals. जिसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं टेलीफोन सिग्नल्स में, टेलीफोन लाइंस में. And after that we are having the Ethernet port that is called as RJ45. यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये है RJ45.
is widely used inside your LAN connectivity, जहाँ पे ज़्यादातर इसका लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी में यूज किया जाता है. Registered jack 45. Okay. And the next one, after building the cable, we need to test. We need to test what? We need to test the connectivity. केबल को बिल्ड करने के बाद हम केबल के स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं कि क्या वो केबल काम करेगा या नहीं करेगा. The cable is going to work or not. So for that purpose, we are having our device called as LAN and a cable tester, which is used for testing the cables. इसको बोलते हैं लोग LAN और cable tester, जो चीजों को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. This is the battery operated device. ये battery operated device है. Okay. So nothing that is. You just need to insert the cable. Just insert the cable over here and turn on the device. The light signal will show. If the light signal is green in both the segments, it means the cable is good. If any point turns out red, means you need to replace the cable. यहाँ पे क्या होता है? ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो भी केबल आपने बनाया उसको यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे और यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? उसके लाइट्स मिलेंगे. और ये लाइट्स को आप टर्न कर सकते हैं. अगर वो ग्रीन कलर में है दोनों साइड तो मतलब केबल आपका सही है. अगर उस ग्रीन कलर में से कोई भी पॉइंट अगर रेड कलर में होता है तो मतलब उस केबल को फिर से कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत. दिस इज अंडरस्टूड टिल ओवर हियर. ओके सर. यस सर. क्लियर. एनी क्वेरीज? No, sir. Very well. Very nice. So let's keep the session till over here. आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you so much everyone for joining the session. Give me 2 hours of time. Bye bye. Take care. Have a great day and see you tomorrow. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.